Hello dear students, I am Dr. Irfan Raza and today you are with me for a lecture on plasma protein. In this lecture we will study about what is plasma, हमारे blood के अंदर plasma क्या चीज़ है, and then we will study about the separation of plasma proteins, the old and the new techniques. And in this lecture we will see the plasma proteins कौन सी types की हैं, how many different type of proteins which are flowing in our blood and their important aspects. This is the first portion of this lecture. In the second portion of this lecture we will specifically study the albumin which is flowing in our blood, the synthesis of albumin, कौन से specific organs हैं जो कि albumin को synthesize कर रहे हैं. In this lecture we will study about the functions of the albumin. अगर body के अंदर albumin की value increase या decrease हो जाए तो क्या होगा, and what type of different functions albumin is playing in our body and the clinical significance. अगर hyper value होगी albumin की या hypo value होगी albumin की, increase या decrease से blood के अंदर albumin की increase या decrease से और किन किन diseases के अंदर albumin increase और decrease होती है, we will study in this lecture. So this lecture is going to be very important, students. I request you to please pay concentration, and if you have pen, pencil or copy, please write down the things. Okay, in the very first slide let's see this video, which is the circulatory system in our body. This is the heart which is pumping blood in our arteries. The blood comprises of different type of cells, and these cells कौन से हैं? These are the RBCs which are carrying oxygen and carbon dioxide. Our blood also comprises of platelets, white color cells, and also the immune cells are WBCs which are producing antibodies in our body. And this is the very important portion of the blood, which is the liquid portion or the blood plasma, and today we have to discuss on this portion. Examiner asks a question, very important question, which हमारे आम लोग जो है उनके दिमागों के अंदर भी होता है कि वो कहते हैं जी हमने ब्लड अगर डोनेट कर दिया तो हमारा टोटल ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, या हमारा टोटल ब्लड वॉल्यूम है कितना. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल ब्लड वॉल्यूम एंड इट्स फंक्शन इन आवर बॉडी. So number one question is total amount of the blood in our body and what type of different functions the blood is performing in our body. So the first answer is that the total blood volume in our body is 4.5 to 5 liters. Let me select the laser points. Yes, this is 4.5 to 5 liters of blood present in adult human body and the blood performing different functions. These important functions are number one, respiration. Respiration means the blood is carrying oxygen from the lungs to the different body organs and the carbon dioxide from the body organs to the lungs, which we are exhaling या हम सांस के जरिए बाहर निकाल रहे हैं. Then it is also involved in the process of excretion. The blood is also playing a very important role in acid-base balance. Students, आपको पता होना चाहिए कि हमारे blood की एक specific pH है. उस pH को narrow range के अंदर रखना important है, and that narrow range या buffering of the blood जो है, it is provided by the different type of proteins in our body, salts and minerals and acids and water, all number of things. So water balance is also very important property which the blood performs, and the metabolized hormones and transport of drugs. This is very important. Students, हम जो भी medicine intake करते हैं, that medicine has to go to a specific organ to perform its specific function. For example, if it's antibiotic, for example, if it's related to kidney, stomach or brain or CNS, whatsoever the drug is, तो उस drug को carry करने के लिए the important source is blood. हार्मोन्स को भी ADH है, डिफरेंट T3 T4 डिफरेंट हार्मोन्स हैं, उसको पैराक्राइन एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं ब्लड के अंदर, ब्लड उनको कैरी करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर. सो this important function is played by the blood. And then the blood also perform a very important function of the defense, that
whenever the antigen, that is हम आजकल कहते हैं जी कि पानी ना पिएं, गंदी हवा है, या आप डाइट इनटेक नहीं करते, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होती, तो जितने टाइप ऑफ वायरसेस एंड एंटीबॉडी वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उसके अगेंस्ट डिफेंस जो प्रोवाइड कर रहा है वो WCs ऑफ द ब्लड परफॉर्म कर रहे हैं. सो दीज आर द की इंपॉर्टेंट फंक्शंस of the blood. One of the important blood function is coagulation. That if there is any bruise, if there is any cut or incision we perform during surgery, the blood coagulates with the help of specific type of proteins which are present in the blood. So blood clotting factors called, they are present in the blood. Now dear students, blood plasma separation, you can see in this video. This is the centrifuge, and nowadays we use a machine which is known as centrifuge, and we can separate the yellow portion or the small particles of the blood which is known as plasma. In this slide we see the whole blood. You can see the whole blood. Whole blood means containing plasma as well as the RBCs, WBCs, also the other proteins, the different type of hormones, different type of minerals. This is termed as the whole blood, which is comprises of plasma as well as the serum. So the whole blood comprises of, question ये होता है कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन करता है कि होल ब्लड जो है आपके सर्कुलेशन के अंदर, उसके मेन कंपोजिशन क्या है. नंबर 1 इज, अभी हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, RBCs, and then the second part is W. So platelets platelets, they very important part of the blood, and the plasma, and then the proteins which are present in the blood, the salts which are present in the blood, and the water which is present in the blood, and the very important portion, the minerals, which is containing iron, sodium, cobalt, calcium, magnesium. It is also the very important part of the blood. Now in this portion, in the blood plasma, which you can see the yellowish portion here, this is the yellowish portion of the blood. The blood plasma is in fact liquid medium of the blood, which is almost 50 to 60%. The very important thing which is to be remembered is that liquid medium of the blood is called plasma, और plasma की concentration कितनी है, 50 to 60%. And the packed cell volume, which is also known as hematocrit, which is 45% of the blood. So one thing which is very important, that in the whole blood, the major portion is blood plasma, which is 50 to 60%, and this portion carries almost all the proteins, while the remaining portion containing WBCs, RBCs, all the salts and the minerals and all these things, which are packed cell volume, which is known as hematocrit, which is 45%. प्लाज्मा प्रोटीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय. अब ये कहा जाता है कि जी अगर हमारे पास ये प्लाज्मा आ गया है, तो इसके अंदर से डियर स्टूडेंट्स हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स को सेपरेट करना चाहते हैं, और उनके सेपरेशन का काज क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं, क्यों हम सेपरेट करना चाहते हैं. लेकिन सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन किस तरीके से परफॉर्म की जाएगी. द वन ऑफ द ओल्ड टेक्निक इज सॉल्टिंग आउट मेथड, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट वी डू, बट इट्स एन ओल्ड टेक्निक. नाउअडेज वी आर यूजिंग द एडवांस टेक्निक विच इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि आपने लास्ट स्लाइड के अंदर देखी है. लेकिन एक क्वेश्चन ये डेवलप होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड द सीरम. So difference between plasma and the serum is presence or absence of a protein which is known as fibrinogen. कौन सी प्रोटीन है जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है और सीरम के अंदर प्रेजेंट नहीं है. This is the key, that is fibrinogen is present or absent. If the fibrinogen is present, it's plasma. If not present, is serum. So this is the basic difference between the plasma and the serum based on the presence or absence of fibrinogen. So if you take a test tube, dear students, and the test tube, you take the blood, after some time the blood will coagulate, and the RBCs and WBCs and all the other parts of the body blood will settle down in the pellet. Here is the yellowish portion. This yellowish portion is known as plasma. This yellowish portion will be almost, if you take the 100 ml, 55 ml will be the plasma. Rest of the formed elements is 45%. This plasma, which is comprising of 55%,
remember this, plasma is 55% and the formed elements is 45%. Plasma, which is 55%, it is composing the 7% of the total proteins which are present in the plasma. This 7% protein contains 7% 58% albumin, globulin is 38%, and fibrinogen is 4%. While in the formed elements, red blood cells are present, WBCs are present, and platelets are present. So one thing is clear in this slide, that if you take 100 ml of blood, after some time blood will coagulate, the formed elements will settle down, which is forming 45%. The plasma is 55%, containing 7% protein. 58% of this 7% protein is albumin, rest is 38% globulin, and 4% is fibrinogen. The question is how we can separate serum protein to diagnose different diseases. तो इस क्वेश्चन के अंदर दो मेन पार्ट्स हैं. सबसे पहला पार्ट तो क्या है कि सेपरेशन ऑफ सीरम प्रोटीन आप करेंगे कैसे. यू गेट द सीरम, separate the serum through centrifugation, and then you have to further separate the proteins, different type of proteins. Albumin को separate करना है, different 3 other proteins जो हमने 4% 7% पढ़ी है, 58% पढ़ी है, उन सारी proteins को हमने separate करना है, which is the basic technique. And why we study those proteins? So serum protein can be separated based on electrophoresis. Now the question is, what is electrophoresis? Electrophoresis is a technique. You can see here is a gel. यहाँ पर एक जेल होगी जो एग्रो से बनी हुई है, ये इसके अंदर वेल्व है. हम सारा सीरम के अंदर, सीरम जो है इसके अंदर लोड कर देते हैं. 50 माइक्रोलीटर 500 माइक्रोलीटर प्रोटीन हम इसमें लोड करेंगे. नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे. डिफरेंट प्रोटीन्स के ऊपर डिफरेंट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स. कितने पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स हैं, कितने नेगेटिव या एसिडिक बेसिक अमाइनो एसिड्स कितने हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर हम जिस अगर इसको सर्कुलेट करेंगे, प्रोटीन को मूव करेंगे, प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर चार्ज. सो दिस प्रोसेस, दिस टेक्निक इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. नाउ द सेकंड पार्ट इज कि हम ये प्रोटीन सेपरेट क्यों करना चाहते हैं, किन पेशेंट्स को हम लेंगे, कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर से हम ब्लड प्लाज्मा, और दिस इज हाउ द क्लिनिकल लैब्स, पैथोलॉजी लैब इज परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस. आप जितने पिंडी इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. और वो कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो इस प्रोसेस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नंबर 1 इज, कौन कौन सी डिफरेंट डिजीजेस हैं, मल्टीपल माइलोमा, इसके अंदर आप प्रोटीन सेपरेट करेंगे. एक्यूट इन्फेक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस जो आपको होते हैं उसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, आप सेपरेट कर सकते हैं. नेफ्रोटिक सिंड्रोम है रिलेटेड टू रीनल डिसऑर्डर्स एंड किडनी डिसऑर्डर्स, दैट इज प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. These are 4-5 different type of diseases in which we perform this procedure, that is electrophoresis के अंदर. Now dear students, हमारे सीरम के अंदर एक इंपॉर्टेंट जो रेशो है that is to be maintained and that is very important ratio. और वो रेशो है रेशो बिटवीन एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, which is abbreviated as A:B, 1.2 to 1.5, ratio 1. Globulin should be 1 and albumin should be 1.5 to 1.2 to 1.5, ratio 1. So albumin concentration is ब्लड के अंदर पर DL, दैट इट 100 ml ऑफ द ब्लड के अंदर एल्बुमिन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 3.5 to 5 ग्राम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एल्बुमिन कॉन्सेंट्रेशन इन 100 ml ऑफ ब्लड इज 3.5 to 5 ग्राम. नाउ AG रेशियो इज डीरेंज्ड. अगर कहा जाता है कि एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो, अगर आपका जो सर्कुलेशन है ब्लड के अंदर, फॉर एग्जांपल आपका एल्बुमिन ड्रॉप हो जाता है या एल्बुमिन इंक्रीज हो जाता है या ग्लोबुलिन ड्रॉप हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, तो ये रेशियो AG रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगी. ये रेशियो डीरेंज होगी. कौन कौन सी कंडीशन, नंबर 1 लिवर डिजीज, फॉर एग्जांपल लिवर सिरोसिस हो जाता है, दैट इज कैंसर ऑफ द लिवर, वी विल सी. Then kidney damage, that is nephrotic syndrome,
kidney damage, renal cannot, kidney cannot reabsorb the albumin or it pass on the albumin in the urine. So kidney disease के अंदर and multiple myeloma और infections के अंदर AG ratio derange हो जाएगी. So आपका blood sample से अगर patient जाता है डॉक्टर के पास तो कहा जाता है कि AG रेशो परफॉर्म करें, दैट इज एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो परफॉर्म किया जाए. तो अगर लिवर डिजीज होगी, किडनी डैमेज होगा, मल्टीपल माइलोमा या इन्फेक्शंस होंगे, ये रेशो डीरेंज हुई भी होगी. नाउ इन दिस स्लाइड मेजर प्लाज्मा प्रोटीन एंड देयर परसेंटेजेस इन द ब्लड कौन कौन सी हैं. सो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन जो है, नंबर 1 इज एल्बुमिन, नंबर 2 is globulin, immunoglobulin and the blood clotting proteins. These are the 4 different type of proteins. Immunoglobulin further can be divided into IgG, IgA, Ig beta, gamma, delta और IgE उसके अंदर divide होता है. लेकिन globulin, immunoglobulin is a part of globulin which can be further subdivided. Albumin and blood clotting factors. These are the major blood plasma protein. यानी कि if you get the plasma of a patient, you will find albumin, you will find globulin, you will find immunoglobulins. और यही आजकल patients जो कोरोना patients हैं उनके अंदर once they become healthy and they recover, PCR टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो उनकी ब्लड सर्कुलेशंस के अंदर एंटीबॉडीज फाइंड होती हैं जो कि स्पेसिफिकली एंटी कोविड होगी. That's why their blood is very important. Immunoglobulins are present there. Blood clotting proteins are also present there. So if this is a bag of the blood, 1 liter of the blood is there. और इसके अंदर मेजर टाइप्स कौन कौन सी हैं. एल्बुमिन इज 60%, मेजर कंपोनेंट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा. That is, albumin is playing a very important role, dear students, in the major component of the osmotic pressure of the plasma. Osmotic pressure is a very important thing. Based on osmotic pressure, आपका different functions जो blood perform कर रहा होता है. Globulin is 35%, which is here, and the fibrinogen is 4%, which is here, and the other is only 1%. So these 3 proteins are in fact albumin, globulin, and fibronectin, making the 99% of the plasma protein. Now the test is, time is of MCQ's question. Please take a pencil, copy to note down the answers, and then at the end you will be provided with the answers key and you can tally your answers.
Okay, dear students, I think you have noted down all the answers, and now in the end you will find another 5 MCQs. Now, dear students, we are moving towards the second portion of this lecture. This is the plasma albumin. Is albumin. In this bag of the plasma, albumin is present 60%. The albumin concentration in these plasma bags is 3.5 to 5 gram per dl. That is, dl means 100 ml. If you take 100 ml of this plasma, that will contain 3.5 to 5 gram of albumin. The albumin, another very important aspect, it's a protein, and that protein comprises of a single polypeptide. The number of amino acids in the single polypeptide is 585 amino acids. And in these 585 amino acids are single polypeptide. The important thing is that it's containing 17 disulfide bridges. That is disulfide bonds. S bonds are present. And the last important thing is the molecular weight of the albumin, because it's a protein. That protein is present in the plasma 60%. Its concentration in 100 ml is 3.5 to 5 gram. It comprises of a single polypeptide, 585 amino acids, having 17 disulfide bonds, which is a very important thing. And the molecular weight is 69 thousandths or 69 kilodalton, right? Molecular weight. Molecular weight is 69,000. Albumin synthesis. Now the question is कि हमारी बॉडी के अंदर albumin synthesize कौन कर रहा है? कौन सा organ, which key organ is involved in the synthesis of albumin in our body? And that organ in our body is liver. Liver is the key organ which is synthesizing albumin in our body, and that albumin is transported to the blood, and that blood having albumin playing its key role. So exclusively synthesized by liver. If examiner अगर आपसे ये पूछता है कि आपका ब्लड के अंदर एल्बुमिन प्रेजेंट है, yes, एल्बुमिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 69,000. कितने अमीनो एसिड्स हैं? 589 अमीनो एसिड्स. कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं? 17 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं. लास्ट स्लाइड के अंदर हमने पढ़े. अच्छा, मुझे ये बताइए कि एल्बुमिन सिंथेसाइज कौन करता है इन आवर बॉडी? सो यू विल रिप्लाई लिवर. That is the exclusively synthesized by liver. And then its concentration is used to measure liver function. If albumin is deranged, it means liver is involved in that. Because क्यों? क्योंकि liver is involved in the production of albumin. अगर इसकी value increase होगी या इसकी value decrease होगी, it means the liver is not functioning well. So, how much amount of albumin a liver can synthesize in per day? 12 gram of albumin can be synthesized by the liver in per day. That is the total protein जो liver बना रहा है उसका 25% है. So now the half life of 20 days. That is question ये develop होता है कि once the liver synthesize albumin, that albumin will remain in our circulation for how much time? So the answer is 20 days. यानी कि half life इसकी 20 days होगी, right जी? Now, albumin functions कौन कौन से हैं? Albumin जो है, this is the liquid portion, albumin in our blood. इसके कुछ important functions हैं, और वो important functions कौन कौन से हैं? Number one, this slide is very important, dear students. 75 to 80% of the total osmotic pressure, जो blood osmotic pressure develop कर रहा है, उसका 75 to 80% is developed with the help of this albumin. That is 25 millimeter Hg mercury. और ये level जिस अगर drop होगा, edema cause होगा. And the condition which is a disease or a syndrome is Kwashiorkor syndrome. Kwashiorkor syndrome. This syndrome is basically because of the protein malnutrition. वो लोग जो vegetarians हैं, वो लोग जो protein intake नहीं करते, तो उनको जो syndrome होगा उसको हम कहते हैं Kwashiorkor syndrome, और इसके अंदर albumin level एकदम से drop हो जाएगा, right जी?
Very important function of the albumin is transport. Another very important function of the albumin is transport. It carries free fatty acids with it. It carries bilirubin with it. It carries steroid hormones with it. It carries calcium and copper with it. So mineral ये carry कर रहे हैं, steroid hormones ये carry कर रहे हैं, bilirubin ये carry कर रहे हैं, and it also binds with the free fatty acids और वो free fatty acids को भी carry करता है, right? Another very important function of the albumin is that it provides nutrition. ये जो albumin है ये क्या है basically? Whether these are carbohydrate, fats or proteins. अभी हमने discuss किया था dear students कि albumin is basically a protein. Yes, it's a protein. So अगर protein है तो how many number of amino acids are there? अभी हमने last slide में पढ़ा था 500 and yes 589 है 75 है. So let's see in the last MCQ question. ये मैं MCQ question के ऊपर छोड़ता हूँ. So how many disulfide bridges are there in albumin protein? Yes, very right. 17 disulfide bridges are present. What is the molecular weight of the albumin if it's a protein? 69,000. So what is an important function of the albumin is that it provides nutrition. Nutrition किस तरह? That it provides sometime अगर patient के अंदर total protein content कम हो रहा है, drop हो रहा है, तो albumin क्या करेगा? Albumin जो प्रोटीन है it will break up and provide the amino acids. वो amino acids टिश्यू में जाएंगे, इंसुलिन बनानी है, मायोसिन बनानी है, एक्टिन बनानी है, हीमोग्लोबिन बनाना है, मायोग्लोबिन बनाना है, एंटीबॉडीज बनानी है. Albumin will break up. 589 amino acids break up होंगे और amino acid provide करेंगे. ये amino acid will participate in the protein synthesis, right जी? तो important source of nutrition है. Then buffering function. So albumin जो है along with other very important buffers in the blood buffers कौन कौन से हैं वो हम next एक lecture के अंदर पढ़ेंगे. उसके अंदर very important role जो blood buffers के अंदर है वो albumin perform कर रहा है. Blood के अंदर एक और important buffers है that is bicarbonate buffer. Bicarbonate buffer is the chief buffer which is controlling the pH of the blood. So अगर bicarbonate की comparison किया जाए तो बफरिंग कैपेसिटी जो कि एल्बुमिन परफॉर्म कर रहा है वो नेग्लिजिबल रह जाती है. एल्बुमिन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, दिस इज द लास्ट पोर्शन एंड आफ्टर दैट यू विल हैव another 5 MCQs. Permeability of the blood brain barrier. Wow, this is a very important function, clinical significance कि ये blood brain barriers जो है blood brain barrier को क्रॉस नहीं करने देता. क्यों? एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स एंड फ्री एल्बुमिन फैटी एसिड जो है एल्बुमिन फ्री जो है ये ब्लड ब्रेन कैरियर बैरियर्स जो उनको क्रॉस नहीं करने देता. hypoalbuminemia, that is if the concentration of albumin drops from 2 gram per dl, 100 ml के अंदर से 2 ग्राम तक ड्रॉप हो जाती है, ये इससे भी नीचे चली जाती है, that is decreased plasma osmotic pressure cause करेगा, osmotic pressure decrease हो जाएगा. So it will cause malnutrition. This is hypoalbuminemia is caused due to malnutrition. That is if you are not taking in proteins, for example nephrotic syndrome जो already proteins हैं या albumin है वो urine से pass on हो रहा है because kidney function perform नहीं कर रहा, nephrons damage हो गई हैं, nephrotic syndrome, cirrhosis of the liver or edema. Look at this. These are the edema legs. You can see the swelling in the lower legs, lower limbs के अंदर edema होगा. Then you will find the अगर आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें आपको लिवर सिरोसिस में नोड्यूल्स अपीयर होंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब हुई भी होगी और फैटी लिवर भी हो सकता है, नोड्यूल्स भी अपीयर हो सकती हैं. सिरोसिस ऑफ द लिवर दैट इज लिवर कैंसर की फॉर्म के अंदर यह सेल्स रप्चर होना शुरू हो जाएंगे. इन केस ऑफ हेपेटाइटिस सी या अदर लिवर सिरोसिस कॉजेज हो सकती हैं. देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम दैट इज ग्लोमेरुलस जो है उसके अंदर या नेफ्रॉन्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी. सो आपका जो एल्बुमिन है वो यूरिन से पास इन होना शुरू हो जाएगा और अगर आप यूरिन टेस्ट करवाएंगे वहां पर एल्बुमिन लेवल रेज आएगा. That is albuminuria, that is यूरिन के अंदर appearance of albumin observed in nephrotic syndrome जो अभी हमने यहां पर पढ़ा है. माइक्रो एल्बुमिनुरिया कितना है? 30 to 300 मिलीग्राम पर dl. राइट जी, इतना अमाउंट ऑफ एल्बुमिन जो है वो रिलीज हो रहा होगा. एंड इफ इट इज रिलीजिंग तो वी कैन से दैट पेशेंट इज गोइंग टू बी रीनल फेलियर, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है वो रीनल फेलियर की तरफ जा रहा है बिकॉज एल्बुमिन जो है वो रिलीज हो रहा है.
आपका ग्लोमेरुलस जो है नेफ्रॉन्स के अंदर वो अपना फंक्शन नहीं कर रहा, नेफ्रॉन्स डैमेज हो चुकी हैं, राइट जी. थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज बर्न्स एंड हेमोरेजेस. इफ देयर इज बर्न, तो इस कंडीशन के अंदर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है वो थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन आप एल्बुमिन देंगे. तो थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन किन किन कंडीशन के अंदर दी जाती है? एल्बुमिन बर्न्स के अंदर और हेमोरेजेस, दैट इज टू मच अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस. ये ब्लड लॉस कहाँ कहाँ हो सकता है? फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीज़ें हैं, ब्लड लॉस हो सकता है ब्रेन के अंदर, ब्लड लॉस, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, आपका एक्सीडेंटल इमरजेंसी हो सकती है. अच्छा, ये एल्बुमिन वहां पर क्यों एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, क्यों दिया जाता है? बिकॉज इट इंक्रीजेस द ब्लड वॉल्यूम. सो अगर ब्लड वॉल्यूम, टू मच ब्लड लॉस हो रहा है और आप ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो देन यू कैन गिव एल्बुमिन. सो एल्बुमिन टेम्परेरीली इट विल इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम. नाउ अनदर टाइम फॉर द MCQs. Let's see the first question. How many number of amino acids are present in a single polypeptide of albumin? Question 7. Which clinical condition is not related to hypoalbuminemia? एल्बुमिन लेवल कम हो जाए, कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस होंगी? एंड विच क्लिनिकल कंडीशन इज नॉट रिलेटेड टू? Tricky question it is. So dear students, these were the 5 MCQ questions and this portion is over. Now let's go move to the answer key. Question number 1 is, the answer of question number 1 is 45%. Number 2, 50 to 60 ml. Number 3, 6 to 8 gram. Number 4, 1.2 to 1.5 ratio 1. Number 5, answer is 60. Amino acid in polypeptide 585. Chief body organ which is participating in albumin synthesis is liver. The condition which is not related to hypoalbuminemia, raised blood volume, because albumin level पहले ही low हो रहा है, blood volume कहाँ से raise करेगा? 45% and albumin. So these are the keys. You can move again to the question session and you can tell your answers again. Thank you very much dear students, and I request you to please subscribe this channel and press the bell icon button. Thank you very much. Take care.